Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Second question is, answer the following. First part is, what is the function of nephridia? Nephridia का क्या function है? How many types of nephridias are found in earthworm on the basis of their location? First of all, first part, nephridia. These are excretory organs of invertebrates. Excretory organ है means क्या करेंगे? Remove करेंगे metabolic waste from the animal's body. नेक्स्ट इज कितने टाइप के नेफ्रीडियास हैं? डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया दैट आर फाउंड इन अर्थवर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन. फर्स्ट वन इज सेप्टल नेफ्रीडिया. इंटेगुमेंटरी नेफ्रीडिया इज द सेकंड वन. फेरेंजियल नेफ्रीडिया इज द थर्ड वन. सेप्टल नेफ्रीडिया कहाँ प्रेजेंट होता है? बिहाइंड द 15th सेगमेंट. कहाँ पे? ऑन बोथ साइड ऑफ द इंटरसेगमेंटल सेप्टा. They open into the intestines. Integumentary nephridia कहाँ होता है? They are attached to the body wall from the 7th segment to the last segment. Next, pharyngeal nephridia are present as 3 paired tufts in 4th, 5th and 6th segment. Pharyngeal nephridia pairs में होता है. Let's see. यहाँ पे pharyngeal nephridia कहाँ है? 4th, 5th and 6th segment में. Next is integumentary nephridia after 7th segment. Next is septal. 15 segment के बाद होता है septal nephridia. So depending upon the location, 3 तरह का था: septal, integumentary and pharyngeal nephridia. Nephridia क्या था? Excretory organs of invertebrates.